In the previous class, good morning. In the previous class, we did discussion on the preparation of nylon 6, nylon 66 and terylene. Starting materials for the preparation of nylon 6, nylon 66 and terylene are, hope आपने चार्ट बनाया होगा, ओमेगा अमीनो कैप्रोइक एसिड, hexamethylene diamine and adipic acid, and for terylene, terephthalic acid and 2 moles of ethylene glycol. We also did discussion on the properties of nylon and terylene. One interesting property of terylene is it absorbs less water, and as it absorbs less water, it is mostly used in hilly areas, जहां पर सन जो है, सूर्य जो है बहुत कम नजर आता है, कम निकलता है. Now let's move further and I have a discussion on what are the uses of nylon. After discussing the properties of nylon, nylon कहाँ पर यूज हो सकता है? See, it is used in the manufacturing of rope. डोर बनाने में काम आता है. It is used in the manufacturing of fabric. कपड़ा बनाता है. It is used in the manufacturing of conveyor belt. जो बेल्ट होते हैं बैग्स के या जो हम लोग कार ड्राइव करते समय लगाते हैं, वो नायलॉन से बने जाते हैं. It is also used in the manufacturing of fishing net. मछली का जाला बनाने में इसका उपयोग होता है. नेक्स्ट, nylon bristles are used in the manufacturing of toothbrush and hairbrush. Bristles टूथब्रश और हेयर ब्रश बनाने में काम आता है. नेक्स्ट, नायलॉन फाइबर is used for stitching purpose in surgery. सर्जरी में स्टिचिंग के काम में नायलॉन फाइबर्स यूज किए जाते हैं. Also, nylon is used in the manufacturing of truck, car tires. आपने नाम सुना होगा MRF नाइलो ग्रिप. उसमें मैक्सिमम तो रबर रहता है, पर ऊपर का जो कवरिंग होता है दैट इज ऑफ नायलॉन, क्योंकि उसमें हीट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत मजबूत होता है और इसलिए टायर की ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है. सो दीज आर द यूजेस ऑफ नायलॉन. इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोप. इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैब्रिक. It is used in the manufacturing of conveyor belt. It is used in the manufacturing of fishing net. Nylon bristles are used in the manufacturing of toothbrush and hairbrush. Nylon fibers are used in stitching purpose at the time of surgery
and it is also used in the manufacturing of truck, car, tires. These heavy vehicle tires can be manufactured with the help of nylon. So these are the uses of nylon. Now let's replace nylon with a terylene and let's see what are the uses of terylene. It is used in the manufacturing of rope. It is used in the manufacturing of fabric. It is used in the manufacturing of conveyor belt. It is used in the manufacturing of fishing net. And the most important is, as it absorbs less water used in hilly area for cloth. कपड़े में यूज होता है hilly areas. This terylene is blended. Blended means mix. Blended with cotton to manufacture terrycot. Mixed with cotton. Terrycot is what? Terylene plus cotton का mixture. It is blended with wool to manufacture terry wool, and it is blended with silk to manufacture terry silk. These are the uses of terylene. Rope manufacturing, fabric manufacturing, conveyor belt, fishing net. हिली एरियाज में स्पेशली इसको क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इट एब्सॉर्ब लेस is blended with cotton to manufacture terrycot, mixed with wool to manufacture terry wool, mixed with silk to manufacture terry silk. These are nothing but the uses of terylene. So nylon as well as terylene are really having good importance in our day-to-day life. They are having industrial uses also. Now, let's move further. See, we are suffering with the problem of pollution due to plastic. It is observed that on the earth, the plastic is deposited in such a huge amount that it is equivalent to the weight of moon. Soil erosion, ecology is totally disturbed due to the plastic pollution. Why it is so? Because plastic does not decompose in the soil. The microbes, microorganisms, bacteria present are unable to degrade these polymers, and therefore some biodegradable polymers are discovered. What are biodegradable polymers? The polymers which are easily decomposed in the soil, the polymer which are easily degraded by the microbes present in the environment are called as biodegradable polymers. Let's see the examples of biodegradable polymer. Number one, PHBV, polyhydroxybutyrate co-beta hydroxyvalerate. Second example,
dextran. And third example is nylon 2, nylon 6 polymer. These are the examples. From these, PHBV and dextran are polyester biodegradable polymer, and as the name nylon is there, it is polyamide biodegradable polymer. Polyamide. Let's see one by one. The first one which we are discussing is PHBV, which is nothing but polyhydroxy butyrate co is along with beta hydroxy valerate. This is the full form. And this complete full form itself indicate the starting materials. Butyrate containing 4 carbon, valerate containing 5 carbon, beta hydroxy means to the beta position hydroxyl group is attached. And see, from the title, end with ATE means ester. How you will get ester? When carboxylic acid reacts with alcohol, we will get ester. Carboxylic acid reacts with alcohol, we will get ester. Think. One chemical, one starting material has 4 carbon atom. Another one has 5 carbon atom. To the beta position, hydroxy group is attached. You have to prepare ester. Means somewhere carboxylic acid is in hidden mode. How to write the starting material? First of all, write the formula. It is very easy. Then give the name. Polyhydroxy butyrate, 4 carbon atoms. C double bond OH, carboxylic acid. Why? Acid plus alcohol giving ester. Ester तो बनने वाला है. Beta hydroxy, functional group. This is alpha carbon. This is beta carbon. Beta hydroxy. Plus another molecule is 5 carbon atom. 1, 2, 3, 4, 5. Repeat the same procedure. Double bond OH, alpha, beta, to the beta, OH is attached. Right? CH3, CH, CH2. CH3, CH2, CH, CH2. Complete the valence. Now think, what are the starting material? C. 1, 2, 3. 3-hydroxy butanoic acid. 3-hydroxy pentanoic acid. This one is 3-hydroxy butanoic acid. And this one is 3-hydroxy pentanoic acid. आप ऐसे भी बोल सकते हो अल्फा बीटा बीटा हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 कार्बन ब्यूटीरिक एसिड. Butyr is 4 carbon to the beta position hydroxy group, and it is beta hydroxy valeric acid. These are the starting materials. So when these starting materials reacts with each other, इंट्रा OH इंट्रा अंदर में ही and carboxylic acid.
what will happen? OH will remove, H will remove. OH will remove, H will remove. And both will be connected with each other. See how it is. ऐसे OH निकल गया यहाँ से. What remains? Free valency CH. Free valency CH. Already to the CH, CH3 is attached. CH के second side में CH2, C double bond O, O. क्योंकि OH निकला और H निकला. अब इधर से क्या निकला? OH. ये बॉन्ड को जोड़ दो. बॉन्ड. उसको अटैच है CH. उसको अटैच है CH2, CH3. एंड देन CH को आगे अटैच क्या है? CH2, C double bond O, O. Free valency taken n times. This is n mole, this is n mole. And the polymer obtained, a long chain polymerism. And see the linkage. COOR. COOR. Ester linkage it has. उसमें ester linkage है. So it is a polyester polymer. And this is nothing but PHBV polymer, which is a biodegradable polymer. PHBV polymer. Biodegradable polymer. Let me repeat once again. Biodegradable polymer. The polymer which is easily degraded due to the microbes present in the environment is called as biodegradable polymer. PHBV is a biodegradable polymer. It is the polyhydroxy butyrate co-beta hydroxy valerate, दो chemicals. 3-hydroxybutanoic acid, 3-hydroxypentanoic acid, दो chemicals. When 3-hydroxybutanoic acid and 3-hydroxypentanoic acid both reacts with each other, undergoes polymerization, then the polyester polymer is obtained, which is nothing but PHBV polymer, and it is the biodegradable polymer. First example which we just discussed, that is a biodegradable polymer, and it is a polyhydroxybutyrate co-beta hydroxy valerate. Hope you understood. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. टाइटल अगर पूरा याद है तो स्टार्टिंग मटेरियल आपने भूलना नहीं चाहिए. पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट 4 कार्बन, हाइड्रोक्सी 2 OH is attached. So OH का अटैच है बीटा पोजीशन, मींस फंक्शनल ग्रुप पहला कार्बन अल्फा, सेकंड कार्बन बीटा पे OH. फंक्शनल ग्रुप पहला कार्बन अल्फा से बीटा पे OH. याद रहता है. So 4 carbon and 5 carbon. After this, the next one is dextran. सर यहां पे क्लू है, क्लू को समझना पड़ता है. PHBV में 4 कार्बन, बाद में 5 कार्बन, एक डिजिट कम कर दो. 4 कार्बन 5 कार्बन, 4 कार्बन एक डिजिट कम कर दो 3, और उससे भी एक डिजिट कम कर दो 2. तो 2 3 4 5 ऐसा एग्जाम्पल है. डेक्स्ट्रा वहां 4 और 5 लिए, यहां 2 और 3 लेंगे. 2 कार्बन, डबल बॉन्ड OH,
3 कार्बन, डबल बॉन्ड OH। वहां पर सर बीटा पे OH था, चेक करते बीटा पे OH आता क्या? फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा आता, फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा है ही नहीं, फिर अल्फा पे अटैच करते हैं। समझने के लिए ये है, कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है वहां पर, ये समझने के लिए आपके फंक्शनल ग्रुप अल्फा क्या लगाया? OH। फंक्शनल ग्रुप अल्फा क्या लगाया? OH। अल्फा यानी मैं पोजीशन की बात कर रहा हूं, किसी के नाम की बात नहीं कर रहा हूं। बैलेंस कंप्लीट करते CH2 CH3 CH। Now what is the name? Yes, 2 कार्बन, सेकंड पे OH है, 2 हाइड्रोक्सी इथेनॉइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी इथेनॉइक एसिड। This one is 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। You may say अल्फा हाइड्रोक्सी 2 कार्बन एसिटिक एसिड, and this one is अल्फा हाइड्रोक्सी propionic acid. These are the starting material for dextran. अब इनका पॉलीमराइजेशन करना है। Let's take it n more, take it n more. n मोल दोनों जगह रखा है। Repeat the same procedure. OH निकाल दिया H, OH निकाल दिया H, जब बॉन्ड खाली हुआ अटैचमेंट कर दो। Then this undergoes polymerization. Then OH निकल गया H, OH निकल गया H, what remains? Bracket free valency CH2, C double bond O, H निकल गया। Now यहां से OH निकला मतलब अटैचमेंट यहां होगा CH, CH को ऑलरेडी CH3 अटैच है, C double bond O, O free valency taken in this, and 2n numbers of H2 यहां भी निकलेंगे और PHBV में भी निकलेंगे। COOR पॉलीइस्टर पॉलीमर, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, यस कंडेंसेशन पॉलीमर, वो भी कंडेंसेशन, and this polymer is known as dextran. So the dextran is the biodegradable polymer. Another example of biodegradable polymer is dextran. Its starting material जैसे PHBV में 4 और 5 था, घटा दिए 2 और 3। मुझे तो लगता है पहला ऐसा याद रखो कि डेक्स्ट्रॉन फर्स्ट एंड PHBV लैटर। क्यों? डेक्स्ट्रॉन 2 3, PHBV 4 5, 2 3 4 5, वहां बीटा हाइड्रोक्सी था, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोक्सी। फार्मूला याद रहता, नाम याद रहता, स्टार्टिंग मटेरियल याद रहता। The starting material for dextran are 2 hydroxy ethanoic acid and 2 hydroxy propanoic acid. When large number of these molecules undergoes polymerization, then polyester polymer is obtained. It is dextran. ये dextran है, polyester polymer dextran, with the elimination of smaller molecule, going to be noted, it belongs to the condensation polymer. ये हेटेरोपॉलीमर होगा कि होमोपॉलीमर होगा?
इसके अगर हम लोग ऊपर सोचे तो हमारा आंसर एकदम क्लियर है। वेरी गुड, excellent. It is a heteropolymer copolymer. Why? It has two different starting materials. PHBV heteropolymer, dextran heteropolymer. Now let's see nylon 2, nylon 6. ये जो पॉलीमर है ये कौन से कैटेगरी में आता है? जनरली बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स कहाँ यूज करते होंगे आजकल? सर्जरी में स्टिचेस के लिए, बिकॉज डिसऑर्ड हो जाते हैं। तो जो डिसऑर्ड होने वाले स्टिचेस है मतलब क्या है, वो डिग्रेड हो गए, तो वो सर्जरी में बहुत काम की चीज है, बोन्स में बहुत काम की चीज है। थर्ड पॉलीमर हम लोग डिस्कस करके आज, एंड दैट इज नायलॉन 2, नायलॉन 6 पॉलीमर। Nylon 2, nylon 6 polymer. Once again, title itself indicate the formula. Nylon 2 having 2 carbon. Nylon 6 having 6 carbon. 6 carbon के लिए हमें याद आता है ओमेगा अमीनो कैप्रोइक एसिड, 6 कार्बन, एक एंड पे COOH, एक एंड पे NH2। सेम लॉजिक लगा, आपको फार्मूला भी याद आ जाएगा। और ये तीनों जो डिस्कस कर रहे हैं ना, ध्यान दीजिए प्लीज, ये ऐसे पॉलीमर हम डिस्कस कर रहे हैं जिनका नाम और प्रॉपरली लॉजिक आपके पास अवेलेबल है, तो फार्मूला पहले याद आता है, उसके बाद उसका नाम याद आएगा। नायलॉन 2 having 2 carbon, नायलॉन 6 having 6 carbon, end with carboxylic acid, end with carboxylic acid. To the first end, NH2 is attached. To the first end, NH2 is attached. Logic. अब बैलेंस कंप्लीट करो, CH2, 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 CH2। अब नाम बोल सकते, इसका नाम तो हमें पूरा पता है, ओमेगा अमीनो कैप्रोइक एसिड, ओमेगा अमीनो कैप्रोइक एसिड। उसी कंटेक्स्ट में इसका भी नाम लिख सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप पहला कार्बन अल्फा, अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को जो पहला कार्बन है अल्फा, अल्फा को NH2 अटैच है, मतलब अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दिस इज एक्चुअली ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो प्रोटीन ऑन हाइड्रोलिसिस देता है, ग्लाइसिन अल्फा अमीनो एसिड। So glycine, that is alpha amino acidic acid, and omega amino caproic acid are the starting material for the preparation of nylon 2, nylon 6 polymer, which is another biodegradable polymer. इनका IUPAC नेम लिख सकते हैं हम लोग, मैग्नीशियम 2 कार्बन, सेकंड नंबर पे NH2, it is 2 amino ethanoic acid, 2 amino ethanoic acid, and this is 1 2 3 4 5 6 amino hexanoic acid, 6 amino hexanoic acid. Let's take n large number, and then they undergoes polymerization. क्या होगा? वही होगा जो ना मंजूरी खुदा नहीं अभी तक हुआ। H निकलेगा, OH निकलेगा, H निकलेगा, OH निकलेगा, एंड कनेक्शन। H निकला, फ्री वैलेंसी NH,
Then CH2, C double bond O. यहाँ से H निकला, यहाँ से OH निकल गया, फ्री वैलेंसी H निकला, अटैचमेंट कौन करेगा? NH. Then CH2, instead of writing 5 इकट्ठा लिखो CH2 5 times. Then again C double bond O, free valency taken. क्यों? H निकला, OH निकला, and this is 2n times H2. ये जो पॉलीमर मिला है, this is nylon 2 nylon 6 polymer, and it is a biodegradable polymer. As it has an amide linkage, it is a polyamide polymer. ये polyamide polymer है, polyamide polymer, and that is another biodegradable polymer. So nylon 2 nylon 6, dextran and PHBV, these three are the biodegradable polymer. All these polymers easily degrade in the environment with the help of microbes, and therefore इन polymers को biodegradable polymer के categories में डाला जाता है. As they are biodegradable, they does not produce any harm to the environment, to the ecology, and therefore such kind of polymers research is really must in the present scenario. So these are nothing but the examples of biodegradable polymer. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की अगर हम लोग अगर बात करें तो डेक्स्ट्रॉन is not included in the syllabus, but as a part of entrance examination we did focus on that one also. Dextran is not there in the list of Maharashtra State Board. So these are nothing but the all biodegradable polymers. इन सभी पॉलीमर को एक बार अगर मैं रिपीट करूं तो as like I said in the previous classes, tabulize all them. Write PHBV, write the full form. Second polymer dextran, third polymer nylon to nylon 6. Next column is a starting material. For PHBV 3-hydroxy butanoic acid, 3-hydroxy pentanoic acid. Dextran के लिए 2-hydroxy ethanoic acid, 2-hydroxy propanoic acid. And nylon 2 nylon 6 के लिए 1,2-amino ethanoic acid and 6-amino hexanoic acid, that is omega aminocaproic acid. नेक्स्ट कॉलम भी बना सकते हैं. PHBV and dextran are the polyester polymer because they contain ester linkage, and nylon to nylon 6 is a polyamide polymer. अगर बात करें हम लोग होमोपॉलीमर हेटेरोपॉलीमर, तो ये तीनों के तीनों अगर ऑब्जर्व करें तो समझ में आ जाएगा. These three are nothing but excellent, very good heteropolymers, copolymers, because in all these the starting materials are different and therefore they belong to heteropolymer. They are the condensation polymer, because in the preparation of these polymers, always in the last step of polymerization, smaller molecules, and commonly it is a water molecule, which is a smaller molecule, is eliminated. Therefore these all are nothing but the condensation polymers. That is about the
Detail regarding biodegradable polymer. See, the polymers are having molar mass in the range of 1000 mu. लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होती है, तो इनका जो मोलर मास है वो काउंट कैसे करते हैं? इट इज काउंटेड इन द फॉर्म ऑफ डीपी, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन. The molar mass of polymer is always counted in the term of degree of polymerization. Generally, average is taken. Complete molecules, its elemental atomic mass, sum it, and then average is taken. But what is degree of polymerization? The total number of monomer units present in the polymer. The total number of monomer units present in the polymer is called as degree of polymerization, in which the molar mass of any polymer is measured. That is very important. In which parameter the molar mass of polymer is measured? The answer is in degree of polymerization. The molar mass of polymer is measured. What is degree of polymerization? The total number of monomer units present in the polymer is called as a degree of polymerization. Now, अभी तक जितनी बातें हमने की है उसमें मोस्टली सिंथेटिक बातें थी. डिस्कस करते हैं जो नेचुरली रबर मिलता है वो क्या है? Natural rubber, which is obtained from the latex of rubber tree. Natural rubber is obtained from the latex of rubber tree. It generally consists of the monomeric unit isoprene. Isoprene. What is that? It is 2-methyl-1,3-butadiene. Isoprene, which is 2-methyl-1,3-butadiene. ये आइसोप्रीन है, ये मोनोमेरिक फॉर्म है. इसका पॉलीमराइजेशन होता है तब जाकर हमें नेचुरल रबर मिलता है. ऐसे नहीं बोलेंगे, इज अवेलेबल ऑलरेडी. 1,3-butadiene. There are 4 carbon butadiene. Diene, 2 double bonds are there. Where? At number 1, at number 3, at number 1, at number 3. To the second position methyl is attached. To the second position methyl is attached. Completed. CH2, CH, CH. CH2 double bond C, CH3, CH double bond CH2. This is isoprene. And when this isoprene polymerize, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि नेचुरल रबर ये बनाया जाता है ना. उसकी स्टडी की गई तब समझ में आया कि इट्स मोनोमेरिक फॉर्म इज आइसोप्रीन. Shift this bond to this side, that side, this side, that side. What we will get? Bracket free valency CH2, C, CH3, double bond, CH, single bond, CH2, free valency N. This is actually natural rubber. This is natural rubber. When isoprene, that is 2-methyl-1,3-butadiene, undergoes polymerization, then natural rubber is obtained. Actually, say cis-1,4-polyisoprene बोला जाता है.
Why it is called as cis-1,4 polyisoprene? Due to its structural representation. ऐसा होता है C, CH3, C, CH2, double bond CH, CH2, free valency taken in tens. मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया. CH3, C, CH2, free valency, double bond C, ऊपर में H, CH2, free valency taken in tens. Same group are on same side. That's why cis. Why 1,4? 1, 2, 3, 4. To the first and fourth position, the branch is attached. Actually, the attachment of monomer takes place. That's why 1,4. Why poly? Large number by 2. What we took? Isoprene. So it is a cis-1,4 polyisoprene. This is the natural rubber. But the rubber which is obtained from गट्टा पेरका रबर ट्री. रबर ट्री का नेम है गट्टा पेरका रबर ट्री. इससे जो रबर मिलता है वो रहेगा ट्रांस 1,4 पॉली आइसोप्रीन. दिस इज 6. How to write trans? Switch it. Switch it means, see this. Let's see. Free valency CH2, C, CH3. Double bond C, H, CH2. Free valency taken in tens. The same group are on opposite side. This is transform. So this is the rubber which is obtained from rubber tree. ये rubber tree से मिला है. कौन सा? गट्टा पेरका rubber tree. And notable part is that transform is more stable than cis-1. Transform ये ज़्यादा stable होता है as compared to cis-1. This is nothing but about the natural rubber. When it is asked, like a note on natural rubber. Natural rubber, the monomer is isoprene, which is 2-methyl-1,3-butadiene. When it undergoes polymerization, then cis-1,4 polyisoprene is obtained, which is a natural rubber. Write this reaction. Then say the rubber is obtained from the latex of rubber tree, and if the rubber tree is Gatta Perka, then trans 1,4 polyisoprene unit is obtained. This is the trans, this is the cis. It is observed that transforms are more stable than the cis, and these isoprene units are arranged in a network structure, and therefore natural rubber is an example of cross-linked polymer. इसको हार्ड बनाने के लिए हमने ऑलरेडी वल्कनाइजेशन डिस्कस किया है, जहां पर दिस नेचुरल रबर इज ट्रीटेड विद सल्फर. द लीनियर चेन स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर इज कन्वर्टेड इनटू नेटवर्क स्ट्रक्चर. Cross-link structure becomes hard, and that process of conversion of soft rubber into hard rubber is called as polymerization. Which one? That is a vulcanization process. Charles Goodyear was the person who discovered that vulcanization. This is about the complete polymer. ये complete polymer है. क्या क्या पढ़ा हमने पॉलीमर में? लेट्स रिवाइज. वी स्टार्टेड दिस पॉलीमर फ्रॉम द क्लासिफिकेशन. देयर आर टोटल 6 bases on which we classify the polymer. Number 1, source or occurrence.
Number two, on the basis of nature of reactions, condensation, addition, ring opening. Number three, on the basis of nature of reactant, homopolymer and heteropolymer. Number four, on the basis of structure, linear or straight chain, branch chain, cross-linked polymer. Number five, on the basis of properties, elastomer, fiber, thermoplastic polymer, thermosetting polymer. And on the basis of degradation, due to the microbes present in the environment, and the classification was non-biodegradable polymer. जितने synthetic polymers हमने इन तीन को छोड़कर पढ़े, कौन से तीन? कौन से तीन? PHBV, Dextron, nylon to nylon 6. इनके अलावा बाकी सभी नॉन बायोडिग्रेडेबल. हाँ, पॉलीथीन में एक पर्टिकुलर थिकनेस तक डिग्रेडेशन 100% नहीं, बट पार्शियल डिग्रेडेशन पॉसिबल है. वो 30 माइक्रॉन्स का लिमिट जो दिया जाता है उसमें. फिर हमने डिस्कस किए कि पॉलीमर बनता कैसे है. तो हमने एडिशन पॉलीमराइजेशन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ा, जिसको स्टेप ग्रोथ मैकेनिज्म भी कहा जाता है. 3 स्टेप्स थी उसमें. नंबर वन इनिशिएशन, सेकंड प्रोपोगेशन एंड थर्ड टर्मिनेशन. और ये सब चेन के साथ है करके बोला जाता है. चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन. Later on we did discussion on LDPE and HDPE. ये निकाल भी दो तो भी चलेगा. HDP, LDP. लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन. नाम लो डेंसिटी पॉलीथीन है, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, प्रेशर रिक्वायरमेंट हाई. Oxygen as a catalyst formed by the formation of peroxide. HDP नाम हाई है, टेम्परेचर लो है, प्रेशर तो 6 to 7 एटमॉस्फेयर ही है. जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज करते हैं. टिटेनियम कॉम्प्लेक्स बनता है, बाद में पॉलीमर. LDP ब्रांच्ड है, प्रोटॉन सेकेंडरी कार्बन से एक्सट्रैक्ट करते हैं. HDP लीनियर चेन. ये डिस्कस करने के बाद हमने बीच में बहुत एग्जांपल एडिशन पॉलीमर में पढ़े. हमने पॉलीथीन बनाया, पॉलीप्रोपिलीन बनाया, हमने ऑर्लॉन यानी पान, पॉलीअक्रेलोनाइट्रेट बनाया, टेफ्लॉन बनाया. बाद में बहुत सारे पॉलीमर डिस्कस किए. ब्यूना एस रबर, ब्यूना एन रबर, ब्यूटाइल रबर, नियोप्रीन, फॉर्मल्डिहाइड के पॉलीमर्स हमने डिस्कस किए. फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, दैट इज बैकेलाइट. फॉर्मल्डिहाइड यूरिया, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड. मेलामाइन, दैट इज अ मेलामाइन प्लस फॉर्मल्डिहाइड, वो भी हमने डिस्कस किया. वल्कनाइजेशन ऑफ रबर हमने पढ़ा. एंड उसके बाद हमने बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स 3 पढ़े. PHBV, Dextron, nylon to nylon 6, and then molar mass कैसे डिटरमाइन करते हैं, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन में. And later we did discussion on नेचर की तरफ आए, नेचुरल पॉलीमर हमने डिस्कस. ध्यान दीजिए, this chapter is not that much tough if you study this chapter systematically. Prepare a chart. First column is naturally serial number. Write the polymer, its starting material, its monomer. If any requirement is there like temperature, pressure, go, homopolymer, heteropolymer, addition polymer, condensation, service. And with that, the chapter polymer will be really too good. This is about the polymer.
आज के चैप्टर में जो पढ़ा है ये सब आपके लिए होमवर्क रहेगा बोर्ड के